हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चार सर्कुलर्स जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये सर्कुलर्स के आने का डिसीजन हुआ था 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। The CBIC has issued circulars dated 31st December 2024 clarifying on various issues। कौन कौन से इश्यूज हैं? सबसे पहला इशू है टैक्सेबिलिटी इशू पर्टेनिंग टू गिफ्ट वाउचर। इसका सर्कुलर नंबर है 243। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। Circular number 242. Availability of ITC in respect of goods which has been delivered by the supplier at his supplier's place of business. Circular number 241. Reversal of ITC by electronic commerce operator in respect of supplies made under sections 9 subsection 5. Circular number 240. सर्कुलर नंबर 243। ये क्या कहता है? ये समझाता है, एक्सप्लेन करता है, क्लैरिटी देता है इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट वाउचर्स। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ वाउचर क्या है? वाउचर क्या होता है? सबसे पहले वाउचर तो आपको पता ही है भाई, जैसे आपको बिग बाजार का वाउचर, स्पेंसर का वाउचर, डोमिनोज का वाउचर, बर्गर किंग के वाउचर, इस तरह के वाउचर्स मिल जाते हैं जिनको आप एक्सचेंज करके कुछ डिस्काउंट ले लेते हो या फिर आपका पूरा का पूरा पेमेंट खत्म हो जाता है। तो कहते हैं वाउचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन फॉर अ सप्लायर to accept them as full or partial consideration for goods or services. If vouchers are recognized as prepaid instrument by RBI and used to settle the obligation, they are treated as money, क्योंकि भाई उनको एक तरीके से आप पैसे के बदले दे रहे हैं, and are excluded from GST. If not considered as money, vouchers may qualify as actionable claim, which are also excluded from GST unless specified under section 2 subsection 102A. When vouchers are classified as money, they are excluded from the definition of goods and services. Transactions in such voucher are neither supply of goods nor services and hence not taxable under GST. When vouchers are not classified as money but represents a promise for goods or services, यानी कि पैसा नहीं है, आपको गुड्स या सर्विस डिलीवर करने का एक प्रॉमिस है, they are considered as actionable claims as per section 2 subsection 1 of CGST Act. Transactions in actionable claims, sir, other than specified actionable claims such as betting, gambling, are categorized under Schedule 3, meaning they are neither a supply of goods nor services. Underlying goods or services, while transactions in vouchers themselves are not taxable, the supply of goods or services for which vouchers are redeemable may be subject to GST. तो जिन गुड्स और सर्विसेज को ले सकते हैं उन वाउचर्स के बदले, वो जीएसटी लग सकता है उनके ऊपर। जीएसटी ऑन वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल, P2P. Distributor, sub-distributor purchase vouchers from the issuer at a discounted price and sells them to end customer, sub-distributor or corporates. Distributor dealer assumes ownership of the vouchers and operates independently. Pure trading of voucher in this case is not taxable under GST. Distribution on commission fee, यानी कि जिसमें कोई कमीशन मिल रहा है, फी मिल रही है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ voucher issuer without owning the voucher. Their role involves marketing, promotion, or other support activities for voucher distribution. Revenues earned as commission or fees from the voucher issuer. The commission or fee earned by the distributor, sub-distributor agent is treated as supply of services to the voucher issuer. GST is payable on this commission fee amount as per the applicable GST rate. Additional services related to vouchers. GST applies to services such as advertising, co-branding, marketing, customization, technology, support provided to voucher issuers. Unredeemable vouchers, breakage. Breakage refers to the value of unredeemable vouchers that remain unused at the end of expiry period. जैसे कि आपको एक वाउचर मिला और उसकी डेट थी, एक्सपायरी डेट 30 सितंबर, और आप उसको यूज नहीं कर पाए, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रेकरेज। Section 9 subsection 1 of CGST Act provides that GST is chargeable only on the supply of goods or services. In the case of breakage, there is no redemption and consequently there is no supply of the underlying goods or services. Breakage amount are not considered as consideration in GST as there is no express or implied agreement between the issuer and the redeemer for payment. In such cases, no GST is applicable on unredeemed voucher as there is no underlying supply of goods or services.
सर्कुलर नंबर 242, ये क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। द क्लैरिफिकेशन एम्फेसिस द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सप्लायर्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज टू रिकॉर्ड द करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द स्टेट ऑफ नेम and the state name of unregistered recipient or invoices ensuring compliance with the GST law। तो क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई अपने पास रिकॉर्ड में रखें, साथ ही साथ उस स्टेट का नाम भी रखें जिस स्टेट से अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट उनके पास आ रहा है। It emphasizes that all online digital service suppliers, including OIDAR service providers and electronic commerce operators, must adhere to the requirements for recording and reporting recipient details. Non-compliance could attract penalties, and suppliers are encouraged to establish systems to ensure proper invoicing and reporting. Mandatory report recording of the recipient's state name on tax invoice, तो उनको मैंडेटरी है कि वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का स्टेट अपने पास रखें, उसका स्टेट अपने रिकॉर्ड में रखें इन रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि वैल्यू कितनी भी छोटी हो सकती है। इंपैक्ट ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, रिकॉर्डिंग द रिसिपिएंट स्टेट नेम ऑन इनवॉइस इज ट्रीटेड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। Under Section 12 of IGST Act, the place of supply for these services is deemed to be the location of the recipient। तो यहाँ पर recipient की लोकेशन को ही place of supply माना जाएगा, उसी के बेसिस पर GST डिस्चार्ज होगा। सप्लायर की ऑब्लिगेशन क्या है? Supplier must implement mechanism to collect and record the recipient's state name before making supply. The recorded state name serves as a deemed address of the recipient for GST compliance। अगर वो ऐसा नहीं करता, penalty failure to include mandatory particulars such as recipient's state name on tax invoice can result in penal action। और इसको उसको जब GSTR 11A फाइल करेगा उसमें भी फिल करना है। सब सर्कुलर नंबर 241, availability of ITC in respect of goods delivered by the supplier at his place of business under X work contract। तो क्या कहते हैं? The clarification addresses references received from automobile sector regarding the conditions under which registered person can avail ITC under section 16 subsection 2B of the CGST Act, especially in the context of X works contracts। Conditions for ITC claim, क्या condition है? As per section 16, a registered person can claim ITC only if they have received the goods or services। This explanation to this clause deems goods to be received when the goods are delivered to the recipient or a person directed by the recipient either by transfer of title documents or otherwise। The CGST Act does not mandate physical receipt of goods, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी अगर गुड्स किसी दूसरे बंदे को दिए जा रहे हैं, फिजिकल रिसीट्स की जरूरत नहीं है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर आईटीसी एलिजिबिलिटी। दिस इज अनलाइक अर्लियर एक्साइज लॉ, जो कि पहले वहां पर फिजिकल रिसीट्स की जरूरत होती थी। डीम्ड रिसीट्स ऑफ गुड्स अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस टू द डीलर यानी कि रिसिपिएंट एट द सप्लायर्स ओईएम factory gate when handed over to the transporter। Transport and insurance may be arranged by the supplier on behalf of dealer। The dealer is liable for claims in case of loss during transit, यानी कि रास्ते में उसकी जिम्मेदारी है, जैसे ही उसके फैक्ट्री गेट से निकला उसकी जिम्मेदारी खत्म, रिसिपिएंट की जिम्मेदारी शुरू। इट इज नाउ क्लैरिफाइड दैट फॉर आईटीसी पर्पस गुड्स आर डीम्ड रिसीव्ड when handed over to the transporter at the supplier's factory gate। जैसे ही उसने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किए उसकी जिम्मेदारी शुरू हो गई। As per the terms, eligibility based on business use, ITC is available only for goods used or intended to be used in the course of furtherance। ये तो जनरल रूल है, अगर आप उन गुड्स को अपने बिजनेस में यूज करेंगे तभी आईटीसी मिलेगा, पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं नहीं मिलेगा, या सब्सिक्वेंटली खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, गिफ्ट में दे देते हो, फ्री सैंपल दे देते हो, आईटीसी नहीं मिलता। Implication, dealer can claim ITC as soon as the goods are handed over to the transporter provided ownership passes at that point। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप उसी समय पे पास होती है तो आप जैसे ही आपके ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स आएंगे आप आईटीसी ले सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर फिजिकल रिसीट्स की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शो कॉस्ट नोटिस इश्यूड फॉर आईटीसी क्लेम ऑन based on physical receipts at the business premises are unwarranted in light of this clarification। यानी कि वो पुराने के जो भी शो कॉस्ट नोटिस इश्यू हुए हैं जिसमें फिजिकल रिसीट्स को मैंडेट किया गया था उन सबको खत्म कर दिया इस सर्कुलर के थ्रू। डीलर्स मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद अदर कंडीशंस, यानी कि उनको 16-17 की कंडीशंस यानी कि बिजनेस यूज के लिए ही उनको यूज करना है, इस तरह की कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। Circular number 240, ITC availed by electronic commerce operators where services specified under section 9 subsection 5
5 and are supplied through their platform. The circular addresses the ITC and tax payment responsibilities of ECOs, यानी कि e-commerce operator. ITC reversal not required as per circular number 167 dated 17th December 2021. ECOs do not need to reverse ITC for input or input services related to supplies on which they have paid tax under section 9 subsection 5 on account of restaurant services. It has now been clarified that ITC will not be allowed to be utilized for payment of tax liability under section 9 सबसेक्शन 5, यानी कि आईटीसी को नहीं यूज कर सकते आप 9 सबसेक्शन 5 की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, एंड होल ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी नीड टू बी पेड इन कैश. It is now clarified that this principle also applies to other services notified under section 9 subsection 5 apart from the restaurant services. सबके ऊपर 9 subsection 5 में सबके ऊपर लग गया है, वो कोई भी जीएसटी का आईटीसी यूज नहीं कर सकते, उनको कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा. यूटिलाइजेशन द आईटीसी अवेल्ड बाय इकोस कैन नॉट बी यूज्ड टू पे टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. द एंटायर टैक्स लायबिलिटी मस्ट बी डिस्चार्ज यूजिंग ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. हाउएवर आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑन द इकोस ओन सर्विसेज. अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस दे रहे हैं, कमीशंस जो ले रहे हैं, उसके ऊपर वो उसको यूज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जीएसटी के 4 सर्कुलर के बारे में बताया. ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुए थे. थैंक यू वेरी मच. आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं.